Hello, everyone. Welcome back. As you know that we are learning about entrepreneurship. In this program, we are actually learning that how an idea can be converted into a successful and impactful business. In our last module, we have covered so many things. And before we proceed, I would just like to, do a quick recap so that, we can freshen up the memory of our last module, and it would be easy for us to cover the next modules. All right. So, if you remember, what was the first module? It was thinking and opportunities. How does an entrepreneur think and grab the opportunity? If we talk about the thinking, the four major factors, very quickly, we'll recap. Problem first mindset. Find out a problem, right? If you find out a problem, provide the solution, people and market will accept it. And if they accept it well, world is all yours. Risk management. How to manage your risk, right? We have discussed that. Egg story. If you're going to picnic, आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, you have 25 eggs. Do not put it in same basket. 6 यहाँ, 4 यहाँ, 5 वहाँ, ताकि सारे अंडे ना टूटे and you can have at least something to eat when you reach your destination, right? So risk management. ऐसा हो सकता है कि that you have a smooth ride, आपकी गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा है और रोड्स बहुत अच्छी हैं and you sail it through smoothly, your luck. But if not, even then you will have something to cherish. So risk management, always. Adaptability. Market changes, dynamic market changes. There are dynamic market changes are happening. New technologies are coming up. So how to keep yourself ready for it? Resourcefulness, right? Optimization of the resources. Think that how you can optimize the resources you have. That's very important. Another traits of entrepreneurial minds, entrepreneurs, what they think? Resilience. You know, we have discussed this in detail in our last session that why resilience is important. And if you can, apply it in your personal life as well, there are some times that you just have to keep going. You just have to keep going. Don't stop, right? And things will move. So there is a very famous saying. एक एक राजा ने अपने कवि को बुलाकर कहा कि आप कुछ 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 ऐसा लिखो कि जिसे पढ़ के खुशी भी हो और दुख भी हो। तो कवि बड़ा परेशान हो गया कि यार मैं ऐसा क्या लिखूं, ऐसी कहानी है। तो कवि बड़ा परेशान हुआ तो उसने लिखा कि ये वक्त गुजर जाएगा, right? That is so beautiful and impactful in just one line. This shall too pass. ये वक्त गुजर जाएगा, right? So resilience is the key. अगर खराब समय है तो वो गुजर जाएगा, हौसला रखिए। और अगर समय सही भी चल रहा है तो जस्ट बी प्रिपेयर, राइट? और वो आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? Adaptability, risk management, problem first mindset, resourcefulness. So everything is intellect. That's the beauty. Everything is intellect, curiosity, right? In any entrepreneur mind, the key factor is curiosity. ये क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? Why is this happening? Why can't I do it? And what if I do this? Curiosity is very important. Visionary leadership. Whatever I'm doing today, whatever decision I'm taking today, whatever investments I'm doing today, how they will fruitful in next 5, 10, 15, 20 years. The vision, right? That's most important. Action bias, right? Action bias. Very important. You just cannot neglect few things to be done. It is very important, right? You just cannot avoid the analysis. You cannot do that. You have to do that, right? You just cannot avoid the market trends. You have to follow them, right? Again, to become an entrepreneur,
You have to identify an opportunity. We have discussed that, how to identify an opportunity and what is opportunity, first of all, right? Any gap between the market and the people's need is an opportunity. Simple, layman. आपको कुछ चाहिए एज एन कंज्यूमर, मार्केट में नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी। वो आपको कैसे पता चलता है? वी हैव डिस्कस दैट। ऑब्जर्व ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स एक ऐप है, यूज इट, यूज इट, यू नो, एटलीस्ट ट्राई करिए, घर जाके थोड़ा सा खोल के देखिए, समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा व्हाट इट इज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ऑब्जर्व ट्रेंड्स, राइट? व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, क्या चीज ट्रेंड कर रही है, क्या चीज नहीं ट्रेंड कर रही है, यू नो। सो these things are very very important, very important। कस्टमर पेन पॉइंट्स, कस्टमर को कहाँ पे, मार्केट में जो कस्टमर है उसे कहाँ पे पेन पॉइंट फील हो रहा है। हम खुद के साथ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वी आर ऑर्डरिंग फूड, वी हैव डिस्कस दैट, राइट? वी आर ऑर्डरिंग फूड and the app is not helping us, or there is a glitch, or there is a delay, then we identify, okay, अगर इस ऐप में ये वाला प्लगइन आ जाए तो शायद ऐप अच्छी हो जाए, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। ये अगर मेरा फूड में अगर ये एक्स वाई जी सॉस और ऐड हो जाती तो शायद टेस्टी बन जाता। फॉर फूड पीपल दैट सॉस इज एन अपॉर्चुनिटी। देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी स्मॉल एग्जांपल्स, layman examples, but in a longer and in a wider picture, if you'll see, there are a lot of opportunities are lies in it। इंडस्ट्री एफिशिएंसीज, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि अगर ऐप में ये चीज आ जाती तो हमने देखा कि इंडस्ट्री में एक इनएफिशिएंसी है ना, तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। हम घरों में रहते हैं, अभी हाई राइज का ट्रेंड जो है बड़े शहरों से छोटों की तरफ भी जा रहा है, फ्रॉम अर्बन टू रूरल। हाई 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 राइज बिल्डिंग्स जिसको हम कहते हैं, 10 फ्लोर, 10 फ्लोर, 15 फ्लोर, 20 फ्लोर्स, राइट? पहले मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में होती थी, अब दे आर इनटू द टियर 2 सिटीज लाइक चंडीगढ़ और मोहाली, एंड उसके अलावा रूरल सिटीज में भी जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि ट्रेंड नया है छोटे शहरों में, तो कुछ मिसिंग पॉइंट्स हैं, राइट? मे बी द इमरजेंसी एग्जिट्स आर नॉट देयर, और मे बी वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है बहुत अच्छे, या फिर उसके लिए हम रेडी नहीं है, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो इस चीज का बिजनेस करते हैं, right? If any organization is into the fire safety, it's an opportunity for them, right? So that's how industry inefficiencies, opportunity for you, right? And analogous markets, we have discussed that, right? How everything works, how everything is connected, right? And you need to understand that the analogs, the anecdotes, that you have to connect them, and then you will able to find out the correct opportunity for you. That's very very important. Validating opportunities. Once you find out the opportunity, once you understood this is what you need to do, how to validate that, right? So remember, demand testing. Check the demand. Is it really there or not, or it's a hawk's demand? We need to check, right? So there was a time when Maggie got banned, if you remember, because of some, some issues with their masala mix, and our food and safety ministry took some harsh decisions, which was very well required as well at that time, what we understood. And later on the changes has been made, but at that time there was a void, right? So people were thinking that yes, there is a demand of and substitute of Maggie or the noodles. And yes, it was there. And how people checked it, I personally know one of the organization. I will not say organization, it was just a small home run business. And they started making noodles at home, and some basic desi masalas, and they started selling it in the uh, areas of the Zirakpur and Mohali. It's in Punjab, if somebody is not from Punjab is on this call. So there is a small city, Zirakpur. They started selling in the nearby, and they realized, yes, the demand is there. So, and later on, they started making it, and even now they are doing it after 4 5 years of that situation. They are not doing it as a label brand, they are doing it as a third party manufacturer for other brands. But eventually, they've found out, yes, there is an opportunity, right? And they validated, and yes, it turned true for them. So, demand testing, competitor analysis, that's again one factor that how you can validate your opportunity. Scalability check, you need to check whether your product or your service or whatever you are doing is scalable or not, at what level it can reach,
feasibility assessment, right? How feasible it is for the consumer, for the market, for the you. That's how you can validate. So again, from idea to business model, when everything is done, you understood the thinking, you have the entrepreneur mind, you found out the opportunity, you validated it. Now what? Idea to business model, right? Remember, idea to business model, value proposition, how to sell your product. I mean, not sell your product, but how to propose your product to the market. You know, that's very, very, very important. That cost, quality, placement, that why people should buy, what is the value add you are doing, what is the differentiator of your product. So all these things comes under the value proposition. Revenue streams, multiple revenue streams for one business, like we have discussed Starbucks, कॉफी भी बेच रहे हैं, मग्स भी बेच रहे हैं, की चेन्स भी बेच रहे हैं, और फिर उन्होंने लेजेंडरी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ टाई अप भी किया और डिजाइनर कप्स लेकर आए. सो वो भी बिक रहे हैं, हायर प्राइस पे बिक रहे हैं. सो दैट्स अ रिवेन्यू स्ट्रीम्स, अलग अलग जगहों से रिवेन्यू. की पार्टनरशिप्स, क्या डिस्कस किया था हमने? हेलमेट. यस, राइट राइट. स्टील बट हेलमेट की कंपनी है, वो मोटर बाइक्स के शोरूम्स के में जाके अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर रही है. दैट्स की पार्टनरशिप. क्योंकि हेलमेट कौन खरीदता है? जो बाइक या स्कूटर चलाता है. तो हेलमेट वालों ने क्या किया? पार्टनरशिप करी डीलरशिप्स के साथ, और अपना हेलमेट लेके वहीं पहुंच गए. कस्टमर आया, उसने बाइक खरीदा, साथ में तो हेलमेट खरीदे. सो दैट्स की पार्टनरशिप. कॉस्ट स्ट्रक्चर, how you are structuring your costs, direct costs, indirect costs, market trends, marketing costs. You have to take care of everything. Remember, we have discussed, you bought a pen, sorry, you made a pen, 100 rupees cost मैन्युफैक्चरिंग, आपने 200 में बेचना है, लेकिन पहले बेचने के लिए क्या कहते हैं उसे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, राइट राइट. आप कैसे एक्वायर करते हैं, आप कैसे एक्वायर करते हैं कंज्यूमर को, उसकी कॉस्ट होता है. तो 120 रुपये उसमें खर्च कर दिए, पेन 200 का बिका, 20 रुपए अर्न हो गए. लेकिन जब वो पहली बार पेन बिका, लोगों को अच्छा लगा, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, तो अगली बार 10 पेन बिके. लेकिन आपकी कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब आप मार्केटिंग कम कर रहे हो, है ना? सो यू आर गेटिंग इनटू द प्रॉफिट. रिमेंबर, रीड इट. कॉमन पिटफॉल्स, कहाँ पे हम थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, हमको थोड़ा ध्यान रखना है. इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करना है. वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दोस आर नॉट इवन एग्जिस्ट, राइट. समटाइम्स वी डू दैट. एक एक हमने एग्जांपल लिया था गूगल ग्लासेस का, राइट. देन इग्नोरिंग फीडबैक, नोकिया, ब्लैकबेरीज, व्हाट दे हैव डन, दे इग्नोर द फीडबैक, एंड क्या रिजल्ट हुआ हमारे सामने, राइट. अंडर एस्टिमेटिंग एग्जीक्यूशन, अगेन आपका आइडिया अगर ब्रिलियंट है लेकिन आपका एग्जीक्यूशन नहीं है, अगेन देयर इज चैलेंज, एंड वाइस वर्सा. दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट. यू नीड अ परफेक्ट बैलेंस. And if your idea is simple but your execution is very strong, bang on, bingo, you hit the bullseye. Why? Because execution is the key. If you execute well, sky's limit. Running out of cash, you have to take care of your bank balance. Everybody has to. हमें भी ध्यान रखना पड़ता है, है ना? Because daily expenses होते हैं ना. You go out for a coffee, 1,000 gone. You go out for a movie, 2,000 gone. So you should not run out of cash. So what do? You just keep on working so that money is keep on flowing. And that's how the business works. You need a runway. What is a runway? हमने डिस्कस किया था. जब आप एक बिजनेस को शुरू करते हैं और जब वो बिजनेस अपना पहला रिवेन्यू कमाने लायक हो जाता है, तब उसके बीच में जो कैपिटल चाहिए होता है उसको रनवे कहते हैं. एंड जब वो सस्टेन करता है बिजनेस, उस वक्त पे भी जो पैसा हमको चाहिए होता है उसको हम कहते हैं what what we call it, remember, runway, right? So that we have to be keep in mind that how we should manage our finances, how should we not out of cash. And then my favorite slide, which I have discussed earlier as well, very quickly, brainstorm daily. That's very important. सस्टेनेबिलिटी, आप कैसे सस्टेन कर सकते हो? आपने ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया, आपने चीजें कर ली, इंप्लीमेंट कर दी, 0 से 10 तक आ गए, 10 से 50, 50 से 100 कैसे पहुंच गए? हाउ वुड यू ग्रो? हाउ वुड यू इवॉल्व? यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, यू हैव टू डू रेगुलर मीटिंग्स, यू हैव टू do learnings, you have to do
market analysis, everything, right? Network actively, increase your network. लोगों से बात करिए, businesses से बात करिए, conclaves में जाइए, functions में जाइए, network active करिए. That's very important. Learn continuously, right? You have to learn. You have to find out. You have to find out ways to learn. चाहे छोटे कोर्सेज है लिंक्डइन में फ्री वाले वो कर लीजिए, coursera है, यूडेमी है, देयर आर सो मेनी साइट्स, देयर आर सो मेनी वेबसाइट, इवन मैं कहता हूँ आप यूट्यूब से पढ़िए फ्री वीडियोस, जो आपको जेन्युइन लग रहा है पढ़िए, कुछ नॉलेज आएगी, इट इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग कभी नहीं छोड़नी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टार्ट स्मॉल, गिव योरसेल्फ सम टाइम, have patience, start small. And then at the last, there were some useful tools, Google Trends for observe the trends and find out the opportunities. There is the best way to do it. There are other tools as well, but yes, Google Trend is one of them. Typeform, right? How you can create forms and send it to people so that you can get some information. Notion to track your daily task. आप कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, डिले तो नहीं हो रहा, आपका कैलेंडर कैसा है, you have to track all of these things. So, module 1, entrepreneurial thinking and opportunities is done. Now we will move to the next module.